बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की इस श्रृंखला में मैं निवेदन करूंगी श्री जुबिन करकारिया जी से, संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, के अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। मैं सीएम परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आभारी हूँ। Under whose leadership, dynamic leadership, UP has emerged one of the fastest growing states in India. आदरणीय मुख्यमंत्री जी और इस महत्वपूर्ण सभा में उपस्थित सभी महानुभावों, मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आज का वेलकम एड्रेस मैं आपकी अनुमति से इंग्लिश में करूंगा। आशा करता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश में काम करके मेरी हिंदी थोड़ी बेटर हो जाएगी। UP is India's largest state and it's one of the most important ones. It's gaining immense prominence internationally. And the Global Investor Summit, which is going to be held soon, will be very beneficial for boosting trade and investments in UP and deepening UP's global connections. My experience, within a short period of a few months, we were able to start the operations in Lucknow. The speed and ease to do business is so important, and this is what we positively experience in UP. Dhanyawad. Thank you very much. I would like to also acknowledge Your Excellencies, His Excellency Peter Ljubik, Ambassador, Embassy of Croatia, His Excellency Rubin Dauci, High Commissioner Malta, Dr. Rui Becerra, Charge d'Affaires, Embassy of Portugal, Mr. Emmanuel Andresi, Consul, Embassy of Italy, Ms. Liliana Uric, Counselor, Head of Migration, Section of Embassy of Sweden, Mr. Cornel Ronwell, HOD, Counselor and Operational Affairs, Embassy of Kingdom of Netherlands, and Mr. Sharat Khadani, Honorary Consul General of Consulate of Kingdom of Netherlands. I would also like to thank and wish all the esteemed dignitaries which are present here for their presence. Also, I would like to mention Shri Ajay Bisaria, a retired IFS officer hailing from UP, who has been the private secretary to former Prime Minister Mr. Atal Bihari Vajpayee and also the Ambassador of India to Canada in his last assignment. I acknowledge the tremendous contribution of Honorable MLA Dr. Rajeshwar Singh in organizing this event and making ease to do business in reality. I also say that further emphasize with India assuming the leadership of G20, India is going to be the next thing on the atmosphere. After today's inauguration, the Joint Visa Application Center for many Schengen states in Lucknow will be operational from 8th of February, and soon thereafter, the Center of Kingdom of Saudi Arabia will also be functional soon. We are also very keen to start a similar operation soon in Varanasi, as you know, the spiritual capital of Uttar Pradesh. Vfs Global will open an academy in partnership with IHCL, the Taj Group, imparting world-class training to the youth of UP in tourism and hospitality. We will be upskilling them, reskilling them for better employment prospects, not only in India, but all over the world. Dhanyawad, Jai Hind. आपके स्वागत उद्बोधन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद महोदय। हमारे बीच VFS ग्लोबल के उद्देश्यों, कार्यों व सेवाओं से संबंधित एक लघु फिल्म है। माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी मंचासीन महानुभावों से अनुरोध है कि कृपया इसका अवलोकन करें, हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण वैश्विक परिदृश्य में आज भारत की स्थिति काफी मजबूत है।
भारत की अपनी मजबूत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की कहानी पूरे विश्व में धूम मचा रही है। भारत की प्रगति में उत्तर प्रदेश का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक, हिंदी हृदय भूमि उत्तर प्रदेश इस देश की आत्मा है। अपनी विविधता, पुरातन संस्कृति, आध्यात्मिकता और बेहतरीन बोली के लिए जाने जाने वाला उत्तर प्रदेश उद्यमी अवसरों और प्रगति की भूमि है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और सेंट जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के साथ ये राज्य भविष्य में अग्रणी राज्य बनने की राह पर है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश व्यवसाय करने में आसानी में दूसरे स्थान पर आ गया है और वैश्विक निवेश के लिए एक वांछित गंतव्य के रूप में उभर रहा है। आज ये उद्योगपतियों और व्यावसायिक घरानों के लिए शीर्ष क्रम वाला राज्य है और फिल्मों की शूटिंग के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। उत्तर प्रदेश का जीवन शहर लखनऊ इस राज्य में तेजी से होने वाली प्रगति का केंद्र है। लखनऊ अपनी बड़े पैमाने की सड़क और रेल अवसंरचना परियोजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश को भारत से जोड़ रहा है। ये स्वच्छ बिजली और संतुलित वातावरण के साथ एक स्थायी प्रौद्योगिकी और डेटा सेंटर हब बनने की ओर अग्रसर है। वीजा, पासपोर्ट और कॉन्सुलर सेवाओं के लिए विश्व में अग्रणी VFS ग्लोबल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की अभूतपूर्व क्षमता में विश्वास करती है। इस विश्वास और प्रतिबद्धता के अनुरूप VFS ग्लोबल ने लखनऊ में अपना पहला संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है, जो दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश का नया प्रवेश द्वार बनने के लिए तैयार है। आलमबाग इंटरस्टेट बस टर्मिनल में रणनीतिक रूप से स्थित इस नए केंद्र से 12 देशों के लिए वीजा आवेदन किया जा सकता है। हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन से बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी वाला ये नया केंद्र राज्य में यात्रा की बढ़ती मांग को बढ़ावा देगा। ये लखनऊ और आसपास के राज्यों के यात्रियों को वीजा आवेदन के लिए मेट्रो शहरों में गए बिना आसानी से मदद करेगा। उत्तर प्रदेश की विकास गाथा में ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी का बहुत बड़ा योगदान होगा। युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के केंद्र और राज्य सरकार के मिशन के अनुरूप प्रशिक्षण और अपस्किलिंग समय की मांग है। इसे पूरा करने के लिए VFS ग्लोबल और IHCL ने लखनऊ की पहली ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी एकेडमी शुरू की है। ये एकेडमी स्थानीय युवाओं को विश्व स्तरीय हॉस्पिटैलिटी कौशल में प्रशिक्षित करेगी और उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल कार्यक्रम के अनुरूप इन्हें रोजगार के योग्य बनाएगी। VFS ग्लोबल उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा करने और उनकी यात्रा करने की आकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रेरक विजन को साकार करने और उत्तर प्रदेश की विकास गाथा में सहभागी बनने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का संकल्प लेते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे मध्य मंचासीन है महामहिम पितार एल युबिचिट राजदूत क्रोएशिया के अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। आई रिक्वेस्ट His Excellency Pitar Ljubičić, Ambassador of Croatia, to honor us with his address. It's always a great honor to be invited on the stage at the last moment and say a few words, but it's not difficult. And I am, of course, very, very much honored to be today and for the first time since I have arrived to India last 7 years to meet Chief Minister Yogi as a well-known person and to all of us as a diplomats. Also, during the time I had experienced and in many occasions progress of the state Uttar Pradesh. May I say it's the biggest one in India, and I like to mention to my Croatian colleagues when we discuss about the importance of local elections, I say, yes, they have local elections in Uttar Pradesh, so some of them, they like to say it's only local elections. Yes, but local elections of more than 200 million people. It's something
very impressive for us as a small state. As you know, Croatia is member of the European Union, and in many ways we follow the policy of the European Union, and since a few weeks ago we are also a member of the Schengen area. That's what I would like to say, talking about why we are today here to open this office of the VFS, how important it is. I met VFS almost 10 years ago when I was ambassador in Libya, and since that time I know what good job they can do and how they help to us as embassies, as diplomatic missions. In that regard, I think opening this office also will be very important for all of us, and especially for Uttar Pradesh, for people for Uttar Pradesh, to make easier to apply for visa, and I wish you all the best in your future. Thank you very much. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हमारे मध्य मंचासीन है माननीय विधायक सरोजनी नगर, माननीय डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी। आपसे अनुरोध है कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। त्याग, दूरदर्शिता, इच्छा शक्ति के प्रति परम श्रद्धेय आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, Honorable Ambassadors Dr. Rio Alberto Carvalho Becerra, CDA Embassy of Portugal, His Excellency Ruben Goci, Malta High Commissioner, His Excellency Peter Lubik, Embassy Ambassador of Croatia, eminent dignitaries, my friend, founder and CEO VFS Mr. Zubin Karkaria, respected Chief Secretary Shri D.S. Mishra Sahab, respected DG Police Shri D.S. Chauhan Sahab, respected Shri S.P. Goyal Sahab, respected Shri Sanjay Prasad ji, and everyone present in this august gathering. Greetings to all. सबका मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अपने व्यस्तम समय में से आपने समय निकाला, इस कार्यक्रम में आए, हम सबको अनुग्रहित किया। उत्तर प्रदेश के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है। For Uttar Pradesh, for my honorable dignitaries who have come from different countries, UP is a state with a population of 24 crores, which is equal to half the size of population of entire Europe. The area of Uttar Pradesh is bigger than the area of United Kingdom. How important Uttar Pradesh is, that it is the most sacred state for 1 billion Hindus across the globe and in India. It has Kashi, it has Ayodhya, it has Mathura, the most religious cities for every Hindu. For tourism purposes, this is the most important city with 107 million tourists and more than 50,000 foreign tourists visiting this state every year. UP is growing. UP is growing, and I welcome you all to Uttar Pradesh. Man sitting here, Adarani Yogi Adityanath ji, he is the man for the future. He is a man with a vision. He is a man with a mission. What mission? Mission to make, he had a mission to make UP the safest state, the safest place on earth to live. And he has accomplished that. Now this is a congenial environment that people from across the globe are coming and investing in Uttar Pradesh. How did he achieve it? Learned dignitaries, you will not believe, in last 6 years, risking everything, crime has been controlled. More than 65,000 criminals have been apprehended under different acts, be it Gangsters Act or different acts. More than 8 billion rupees properties of mafias have been attacked in Uttar Pradesh. And more than 200 dreaded criminals were liquidated under his leadership in last 6 years. This is why we are living in a safe Uttar Pradesh, the safest place in India to live. The state which is known for good governance, the state which is ranked #1 in good governance in entire India. The state under his Honorable Chief Minister's leadership in ease of doing business has risen from 14th rank to 2nd rank. As far as economy of Uttar Pradesh is concerned, it is now the 2nd largest economy in India. The state is developing, growing at an economic rate of more than 10% every year. So I welcome you all to Uttar Pradesh, a land of opportunities, a land of immense opportunities. And I am so grateful
that Honorable Chief Minister, again I say, has granted time to come for this event, and we are all very lucky, and it's a privilege for me to be working under his leadership. It's a privilege for all of us to be working under his leadership, and he is taking Uttar Pradesh to a different heights altogether. I'm so grateful. Yogi ji, he is a monk with a mission. What missions he has? One mission was Safe UP, second mission is mission development, third mission is mission empowerment. Honorable ambassadors, you will not believe what numbers UP is giving social security to. More than 2 crore people are getting different social security measures, be it pensions for widows, be it pensions for old people, be it pensions and scholarship for youth. More than 2 crore people are getting that advantage. That is at the core of the heart. Yogi ji का हृदय इतना कोमल है, गरीबों के लिए, वांछितों के लिए. For poor people, he would do anything. He can go to any extent. And how much he is committed for administration, I can quote an example. Last year when COVID was at its peak, Honorable Chief Minister was also down with COVID, but he didn't take even a day's off. I was also down with COVID. मैं hospitalized था. We were hospitalized. Honorable Chief Minister called up to ask about our well-being. And when hearing his voice, I said, sir, आप क्यों नहीं hospital जाते हैं? When there was no SOP, there was no treatment defined, and there was problem. But he said, मैं एक दिन भी छुट्टी नहीं लूँगा राजेश्वर, क्योंकि मेरी जनता का क्या होगा, मेरे कोविड वॉरियर्स का क्या होगा। जो आदमी अपनी जान की परवाह न करते हुए प्रदेश के लिए लगा रहे, ऐसे समर्पित हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, and we are so lucky. तभी इसी कारण उत्तर प्रदेश आज नई ऊंचाइयों पे जा रहा है. पिछले 6 वर्षों में Mr. Zubin, we have never seen Yogi ji take even a day's leave off. So this is how hardworking he is. From 5 a.m. in the morning till 11 p.m. at night, he is always available. This is how Yogi Adityanath ji is. We are so grateful, and I am so grateful to my dear friend Zubin. What a spectacular journey it has been. From one center in 2001 to now more than 3,000 centers, presence in 144 countries. It's an amazing journey. ये आपकी जर्नी हमारे यहाँ के युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है. आप ग्लोबल एकेडमी खोल रहे हैं, हमारे युवाओं को ट्रेन करेंगे उत्तर प्रदेश के, और ये हमारे युवा देश विदेश में हर जगह जाएंगे. कितना अच्छा इनके लिए अनुभव रहेगा, कितना सीखने का मौका मिलेगा, उत्तर प्रदेश का कितना नाम होगा. इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ. आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन, एंड वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल दैट वी आर विटनेसिंग दिस ग्रेट इवेंट. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद और आभार महोदय. अब वो गौरवशाली क्षण आ गया है जब उत्तर प्रदेश को एक सौगात मिलने जा रही है, जो उत्तर प्रदेश वासियों के लिए सुगमता और सुविधाओं के द्वार खोलेगी. मैं बहुत ही आदर के साथ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि आपके समक्ष रखे हुए माउस को क्लिक करके औपचारिक रूप से VFS ग्लोबल संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र और अकादमी का शुभारंभ करें, उद्घाटन करें, हमें अनुग्रहित करें. VFS ग्लोबल जॉइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर एंड अकादमी का शुभारंभ आज हो रहा है, जिससे नागरिकों को वीजा संबंधी सुविधाएं सुगमता से प्राप्त होंगी और वीजा आवेदन के लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा. साथ ही साथ युवाओं को हॉस्पिटैलिटी के गुण सिखाकर उनकी प्रतिभा और कौशल को निखारा जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी. माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी दूरदर्शिता, सकारात्मक सोच और दमदार कार्यशैली का परिणाम है कि आज प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन बन रहा है और विकास के नित नए सोपान चढ़ रहा है, जिनका संकल्प है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें. VFS के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में
मंच पर उपस्थित माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, इस आयोजन में उपस्थित हिज एक्सेलेंसी एम्बेसडर ऑफ क्रोएशिया पीटर एल यूपिचिच, हिज एक्सेलेंसी ऑफ माल्टा मिस्टर रूबिन गाउची, डॉक्टर रूई बसेरा, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, पुलिस महानिदेशक श्री DS चौहान जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय से SP गोयल जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी टूर ऑपरेटर्स, एयरलाइन और ट्रैवल एजेंट्स और अन्य उपस्थित महानुभाव, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एक सप्ताह पूर्व लखनऊ में VFS का उद्घाटन न केवल लखनऊ वासियों के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक अवसर है। मैं इसके लिए VFS के संस्थापक और उसके CEO श्री जुबिन करकारिया को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे अभी यहां बताया गया कि लखनऊ से इस केंद्र के शुभारंभ होने के साथ ही 10 देशों के लिए वीजा आवेदन करने की एक सरल प्रक्रिया प्रदेशवासियों को प्राप्त हो जाएगी। वास्तव में आज के समय में तकनीक का उपयोग करते हुए हम न केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बल्कि ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस दिशा में थोड़े बहुत प्रयास अगर प्रारंभ हो तो लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 वर्षों के दौरान इस देश के अंदर उस व्यापक बदलाव को लाने का जो कार्य किया है, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और खासतौर पर वीजा, पासपोर्ट आदि के लिए जिस प्रकार से एक कॉमन मैन को और खासतौर पर इमरजेंसी के समय में जिस प्रकार की परेशानियां होती थी, उन सब से मुक्त करते हुए इमरजेंसी के समय बहुत बार आपने देखा होगा पिछले 5-6 वर्षों के दौरान बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जहां पर भारत के फंसे हुए लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए या किसी आपदा से पीड़ित लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए जो कार्य हुआ है, वैश्विक मंच पर उनकी सराहना हुई है। और मुझे यहां बताया गया कि VFS ग्लोबल का यहां पर श्री जुबिन करकारिया ने इसे 2001 में लॉन्च किया था। यह एक मेड इन इंडिया है, कंपनी है जिसने एक ग्लोबल लीडर के रूप में आज अपना एक स्थान बनाया है। मैं इसके लिए जुबिन करकारिया को और उनकी पूरी टीम को हृदय से इसकी बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि यहां पर VFS ग्लोबल विभिन्न सरकारों और दूतावासों को वीजा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आउटसोर्सिंग और तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराने की दुनिया की एक अग्रणी कंपनी के रूप में अपना स्थान बना चुकी है।
मुझे याद है कि वर्तमान में भारत के लिए दुनिया के जो 12 देशों में पासपोर्ट और वीजा सेवाओं को यह कंपनी प्रथम आउटसोर्स वीजा सेवा पार्टनर के तौर पर कार्य कर रही है और अब तक इस कंपनी ने 2 करोड़ से अधिक आवेदनों का निस्तारण भी अपने स्थापना के बाद से संपन्न किया है। संकट काल में एक भरोसेमंद सहयोगी के रूप में कैसे कार्य होता है। ऑपरेशन राहत 2015 जब अरब देश में यमन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित देश वापसी की कार्रवाई को संपन्न किया था। वंदे भारत मिशन 2020 कोरोना कालखंड में वैश्विक यात्रा पर लगे प्रतिबंध के फलस्वरूप विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए जो संचालित मिशन रहे हैं, या ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 जिसमें अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के कब्जे में जाने के बाद भारतीय नागरिकों को और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित भारत लाने के लिए जो मिशन संचालित हुए हैं, ये वे मिशन है जो वास्तव में संकट के समय या किसी आपदा के समय अपने नागरिकों को, अपने मित्र देशों को सहायता पहुंचाने के लिए एक सफलतम कार्यक्रम होते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, पिछले वर्ष जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ, इस दौरान यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय बच्चों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भी जो कार्यक्रम चले, जो ऑपरेशन भारत सरकार के चले हैं, उसमें इस प्रकार की आउटसोर्सिंग कंपनियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और मुझे प्रसन्नता है कि अब इस केंद्र के शुभारंभ होने से ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली तथा सऊदी अरब की यात्रा करने के संबंध में एक यहीं पर सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। और यह केंद्र प्रतिवर्ष जो मुझे बताया गया कि 1,20,000 से अधिक वीजा आवेदनों का निस्तारण करने की अकेले क्षमता रखती है। यानी अकेले लखनऊ में ही इतनी सुविधा यहां से प्रारंभ हो पाएगी। वीएफएस ग्लोबल इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के सहयोग से राज्य सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम के अनुरूप प्रदेश के युवाओं को भी स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपना योगदान देगी। यह उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए और खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश की अतिथि देवो भव की एक परंपरा रही है, उसको आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं एक बार फिर से वीएफएस ग्लोबल को अपना लखनऊ सेंटर प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी का एक सबसे बड़ा प्रदेश है, इस प्रदेश के न केवल 24 करोड़ की आबादी बल्कि उत्तर प्रदेश के से जुड़े हुए अन्य राज्यों के नागरिकों को भी यहां से सुविधा देने में हम लोग यह कंपनी सफल होगी। मैं एक बार फिर से वीएफएस ग्लोबल को और इसके संस्थापक सीओसी जुबिन प्रक्रिया को और उनकी पूरी टीम को लखनऊ में अपनी सेवा को प्रदान करने और वहां भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के ठीक पूर्व एक सप्ताह पूर्व इस सेवा को यहां प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य के एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में उत्तर प्रदेश की 24 से 25 करोड़ आबादी की सेवा को बेहतरीन तरीके से देने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह कंपनी सफल होगी। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद। आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। माननीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं
आमंत्रित करूंगी माल्टा के उच्चायुक्त महामहिम रुबिन गौसी जी को कि धन्यवाद ज्ञापित करें। नाउ आई रिक्वेस्ट हिज एक्सेलेंसी रुबिन गौसी, हाई कमिश्नर ऑफ माल्टा, फॉर वोट ऑफ थैंक्स। Well, I start my vote of thanks by thanking you very much. It's a great pleasure to be here in Lucknow. It's my first time here in Lucknow as well. I've been in India for 2.5 years. I've been quite around. I've been to Varanasi, so it's not my first time in Uttar Pradesh, but definitely my first time here in Lucknow. And I arrived yesterday evening and I was impressed by what I saw. I would also like to thank Mr. Zubin for creating VFS. I remember when I joined the diplomatic corps of Malta back some time ago. I heard the story from, had these courses, and I heard the story of how VFS came to be. That there was this gentleman who was speaking to an ambassador. The ambassador was pouring his heart about the problems of visas and queues, etc., etc. And the idea of VFS came to mind. And today we see the success of VFS. We don't know what we would do without it these days. My country, Malta, is quite small. But our resilience is also quite high. I would like to say that, for instance, when I was serving in Turkey, Malta was one of the first countries, along with Denmark, to work with VFS and help VFS enter in Turkey. Today, it's another success story. But what I also would like to point out about VFS is that finally it is an Indian company. I know, legally or technically you may be in Switzerland or Dubai or whatever. But the soul of VFS is in India. And that is something which I really appreciate. I can, in a sense, make a comparison between VFS and the great state of Uttar Pradesh. Both states have seen, Uttar Pradesh as a state and VFS as a multinational company, have seen a way forward which made them grow. And this, I understand, is thanks to His Excellency, the Chief Minister, especially in the last 10 years, and Mr. Zubin. So I am honored to be sitting beside both of your great souls today. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इस मंच के माध्यम से धन्यवाद हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम को एक गरिमामयी आयाम दिया, और सभी मंचासीन महानुभावों का हृदय से आभार, धन्यवाद। गाड़ी बुला लो, हम तो नहीं रहेंगे। सभागार में सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया जलपान ग्रहण करें। Arrangements for refreshment and tea have been made in the auditorium or hall. You all are requested to enjoy them. Good day, have a brilliant day ahead. शुभ दिवस।